Hello students, good morning. How are you all? Yes, Uddhav, hello. I'm good. What about you? आज लास्ट लेक्चर है. Yes, today is the last lecture, right? Yes. Okay, so in today class we will discuss hashing student. What is hashing and what are the component related to hashing and what are the collision resolution techniques, right? Everything we'll discuss in today class, bache. So this is my brief profile. You can join this Telegram ID, right? Okay. So in this class, we will cover bache hashing, hash functions, collision resolution techniques, linear probing, quadratic probing, and double hashing, and some PYQ also. Okay. So now, first of all, what is hashing, student? What is hashing? Hashing, it is a searching technique. Hashing is what, sir? It is a searching technique. Okay. And the goal of this hashing is what? Search time. Search time is equals to order of 1 constant. Okay. But this is not 100% true, but 99.99% the search time is order of 1. This is the goal of hashing. Understood, student? Okay. So what are the component in hashing, student? We'll discuss. These are the component of this hashing. So first discuss hash function. Hash function and key space and hash table. Here hash table, it is a data structure, student, right? This hash table, this is data structure. And what is hashing? Hashing, it is a searching technique, right, student? Okay. So let first discuss hash function, student. First discuss hash function. What is hash function, student? Hash function is a function which take input as a key and produce hash address, right? Hash function is a function, student, which take input as a key and produce what, sir? Hash index or hash address in the hash table. Okay. So for example, some of the popular hash function is division modulo method, right? So hash function is take input as a key and key mod of, sir, n. So this is popular hash function, student. Okay. Where m is the size of hash table. The size, this is the size of hash table. Right? And what is the size of hash table? It is not equals to size of hash table. It not equals to set to 2 की power k, right? That it is not equals to 2 की power k. Understood? Oh, so what should be the size of hash table, student? Size of hash table. If I talk about size of hash table, it is a prime number which is not nearer to
which is not nearer to 2 to the power k. It must be a prime number. Understood? So for example, let student, we have keys like so 10, 12, 64, 75, 66, 83, 99, like this. And the size of hash table equals to, let's suppose, 10. Okay. So where is this key stored, student? So you can apply hash function. Hash function, you can apply hash function of this one. So hash of 10 equals to what, sir? So 10 mod 10. So it will give you such 0. So this key is stored at 0. Where is, sir, sir, this key 12? So you can apply hash function here, 12 mod 10. So it produce you 2. So yeah, 2 index. But this is 0 hash index in the hash table. So this is hash table. And this produce 2, and you can store here this 12. Similarly, you can store 64 here. So where 64 will be stored, sir? In this place. 75 it gives, sir, has index this one. 66, sir, here this 66, and 83, sir, 83 come at this place, and 99 come at this place. So in this way you can use hash function, bache. Understood? So this is the use of hash function. But the important thing is the size of hash table is what? It is not equals to 2 to the power k. It must be a prime number, and which prime number? Which is not nearer to 2 to the power k. Understood? Now next is hashing. Hashing, it is a searching technique. It is mapping larger set to smaller set. It is a mapping of larger set to smaller set. So hashing is a searching technique, student. Mapping larger set to smaller set, it is many to one. So here this is this data, this is a key space, student. Key spaces, and this is hash table, student. And here this is hash function, student. Here this is hash function. So this entire thing, this is known as hashing, right? There are 3 component: key space, hash function, and hash table. First I apply hash function on the key, and it produce hash address, and you can store these are the hash indexes or hash address. You can store respective key corresponding to hash address. Okay. So HU, this is the key space or universe, right? Key space, this is the key space. I am applying hash function. So it produce for what, sir? Hash indexes 0 to m minus 1. Okay. So what is the problem here, sir? Problem is collision. Sir, what is the collision, sir? Kaise? My dear student, here K78. Let this is the hash function, student. Let I assume this is hash function. And let m equals to 10. Okay. So K1 you are I am applying K1. So K1 gives what, sir? If you apply hash function on K1, K1 means, let I understand, 1 mod 10. So it will give, sir, 1 hash index. So first apply hash function on K1, it produce 1. So you store here K1 student. Okay. Similarly, if I talk about K78, if I apply hash function on K78 key, so let this is a 78 key mod of 10.
So it will give what, sir? 8. So hash index is 8. So K78 is stored at this index. Sir, K70 first apply hash function, it gives 8 and 78 is stored here. Sir, what will happen if another key is, if I talk about 68, so the 68 mod of 10, it will give what, student? 8. So this is the problem here. So K68 is also stored here. So this is problem, student. एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती बच्चे. So this is a collision. Okay. Yes, Uddhav, are you in the class? आप क्लास में हैं? यस, कर दिया. Okay, so problem, what is the problem in this entire thing? The challenge is collision, student. How to remove collision, student? How to remove collision, bache? Sir, for removing collision, first use better hash function. What you have to do, sir, how to handle this problem, collision? So first use better hash function, student. First use better hash function. Better hash function, but never say no collision, bache. But never say, you never say no collision. If still collision, then use collision resolution technique. Use collision resolution technique. Use बच्चे collision resolution techniques. First of all, use better hash function. Yes, okay. Yes, your dedication is very important, Uddhav. Understood? Definitely you will get good rank in GATE 2026 exam. Okay. The important thing, you are very dedicated person. Okay. Dedicated student. So use collision resolution techniques. Sir, कौन सी techniques हैं? Collision resolution techniques, student. The name of collision resolution techniques. Chaining, we'll discuss, student, chaining. Linear probing. Quadratic probing. Fourth, double hashing. We'll discuss all these type of hashing in today class, bache. So collision resolution techniques. So these are a collision resolution techniques, student. First is chaining and second is open addressing. Okay. Chaining and open addressing, student. So what will happen in chaining? Sir, in chaining, dear student, first create, this is a hash table. This is a hash table. You have enough space inside the hash table. Still, you are connecting keys outside the hash table in the form of linked list, bache. So I am creating a linked list. Data इस तरह से arrange आप करेंगे. Okay. So this is the concept of chaining. Okay. This is the concept of chaining. We will use this data outside of outside of this hash table, student. This is hash table, sir. This is hash table, bache. So this is hash table. We will use data in the form of linked list, bache. So that's why this is known as chain. But in chaining, this is outside table, outside of hash table. Okay, outside of hash table. Sir, some important point related to chaining, bache. Sir, key will be stored outside the hash table.
Deletion is easy as compared to open addressing. We'll discuss shortly. Student, no overflow. You can handle it. Can handle unlimited number of collision. No overflow because you have to create a node and just at this pointer, student. So no overflow. It can handle unlimited number of collisions, right, student? Insertion from beginning always because linked list में beginning से you insert करोगे. Then what is the time complexity for this? Order of 1. So that's why insertion from beginning. Okay. Another concept is open addressing. This is inefficient utilization of memory. Here, memory is not utilized properly. Inefficient utilization of memory. Okay, because you have space inside the table, still you are connecting outside the table. You have this space now. You have this space now. You have this space now. Still you are connecting outside the table. So inefficient utilization of memory, right? So for better utilization of memory, then we will use open addressing, student. What is open addressing? Open addressing is saying that data is stored inside the table. This is hash table, student. You store data inside the hash table. Inside the hash table. All data inside the hash table, right? So here key will be stored. This is also known as closed hashing because you all data is stored inside the table. So that's why this is all known as closed hashing. Key will be stored inside the hash table, student. So there are three types of open addressing, right? Open addressing. First, we'll discuss linear probing, bache. And what is the problem here? It suffer primary clustering. Okay. Second is sir quadratic probing. It suffers secondary clustering, right? Linear probing suffer primary clustering. So another concept is quadratic probing, right? Quadratic probing remove primary clustering, but it suffer what, sir? Secondary clustering. Now another concept is for removing secondary clustering as primary clustering. Then the another concept is double hashing, right? And we'll discuss 1 2 3 and इसमें problem क्या है बच्चे? Deletion complex है and overflow occur because you can store at most maximum कितना data? Size of hash table. So overflow occur and deletion is complex as compared to chaining. Okay. So now first discuss chaining. Yes, student, wait for 1 minute, 1 or 2 minutes, come back. Yes, student. This type of question form in GATE exam. So let's discuss chaining with by using this question, bache, with this question. So let m equals to size of hash table is 10 given. Size of hash table 10 given hai, right? And hash function, this hash function is given. And these are the keys. Okay. So how we can store this data in chaining, student? So in chaining, first create hash table. This is hash table.
0 to 9, the size of hash table, student. Sir, I have to store this 10. How we can store this 10, student? So first apply hash function h of 10. So it produced 10 mod 10. So it will be, sir, 0. So 0 index पे, sir, you first create node, student. First create node, right, through malloc calloc, and the last part of this is null. Let the address of this node is 100. So this contain 100. So in this way you can attach this node here. Understood? So 10 is completed. Now what about 55? Similarly, sir, h of 55. So it will give, sir, 55 mod of 10. So this is 5. So 55 is stored at 5 index, student. So let the address of this is 2000. Okay. So 55 is stored here, right? After this, in similar pattern, you apply, sir, hash indexes here. Sir, apply hash index. So 69 के लिए it produce what? 9, student. Okay, similarly for 74. So similarly for 74, student. So 74 के लिए that the address of this is, sir, 4000. So 4000 is stored in this place. Now, sir, 52. So 52 come at this position, student. Okay. What about 65? Sir, again 65 gives index, sir. What, sir? H of 65, sir, this is a collision. So H of 65 is, sir, 65 mod of 10. So it produce 5, but it can handle unlimited number of collision, बच्चे. Sir, 5 पे आ रहा है. Sir, how we can handle collision? So first create, sir, node and adjust in here, adjust pointer and connect link, बच्चे. So after this 65, बच्चे, always insert at the beginning position, बच्चे. So this is 5 index, right? Insert at beginning in linked list. If you insert in beginning, then this 65 node, and here address is 2000 and 5000 हो गया, 6000. So you can store here 6000. Okay, 65,000. Now after this 79, 79 gives what, sir? H of 79 equals to 79 mod of 10. So this is 9. Okay. कहाँ तक हो गया? 6000, 7000. So यहाँ पे कितना स्टोर हो जाएगा, बच्चे? 7000. Okay. Similarly 85, student. So 85 का again 5 आएगा. So 85, and it contain inside at beginning. So let the address of this is 8000. So here 8000 is stored, बच्चे. 8000. Understood? Now 44. This 44 has index 4. So it is stored this 4. So
एंड द एड्रेस ऑफ दिस इज, कहाँ तक हो गया बच्चे? 8000, 9000. So this is 9000. Okay. And 75, sir, 75 again gives, sir, has index, sir, 5. So this is stored here. So in this way, this linked list is created, bache. This is chaining. Okay. So in this way, you can maintain this one. Sir, what is the entry here, student? This is null. Okay. And here, this is null. So this type of question asks maximum and minimum chain length, bache. Maximum and minimum chain length. What is the maximum minimum chain length? So here the chain length is what, sir? 1. And minimum chain length is 0. So chain length is 1. Sir, minimum chain length is 0. So here minimum chain length is 2. What about the chain length here? Sir, kitna hai? Sir, 4. So minimum chain length is 0. Here minimum chain length 0. So this is 0 and this one is 2. So this type of question asked in GATE exam. Maximum chain length kitna hai? You have to tell maximum chain length. Maximum chain length equals to, sir, 4. And what about, sir, minimum chain length? Sir, minimum chain length is 0 and average chain length. Average chain length sum of all divided by size of this hash table. Sum of all कितना है बच्चे? Sir, first का 1 plus this is 0 plus, sir, 1 plus 0 plus, sir, 2 plus, sir, 4. This plus, sir, 0 plus 0 plus 0 plus 2 divided by size of this overall hash table कितना है बच्चे? Sir, 10. So 1 plus 1, 2, 4, 8 to 10. So it is 10 divided by 10. So एवरेज चेन लेंथ कितना है? 1. तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बेटा गेट एग्जाम में बनते हैं. ओके. Okay. So in this process, it can handle unlimited number of collision. No problem, बच्चे. No problem. But so these are the points related to chaining, student. The main advantage of chaining is can handle any number of collision, no overflow, right? No overflow, student. Second point, even though the space is available inside the hash table, we are using the outside hash table space. So this is inefficient utilization of memory, bache. This is inefficient utilization of memory. Okay. Now third point, longest chain possible with n keys is what's our n? Let's suppose if all the keys store in single length, then the maximum chain length is n. Then the search time complexity n. So worst case time is what, sir? In this scenario, the probability of this scenario is very negligible, bache. The probability of this scenario is very, very negligible. But still this case, then in this case, worst case search time complexity is order of n. Insertion deletion can be done at any time without affecting others. Less sensitive to hash function or load factor. Okay. Chaining take more space but less time. Less sensitive to hash function or load factor. Sir, load factor से कोई फर्क पड़ेगा बच्चे? यहाँ पे होता क्या है सर? लोड फैक्टर. लोड फैक्टर क्या है? ये देखो लोड फैक्टर.
the number of keys getting stored in one slot is called as load factor. Load factor का formula equals to n upon m, right? So this is load factor, student. What is n? Alpha equals to n by m. Number of element in each slot, a number of key in each slot. So load factor means maximum load allocated to each slot. On an average, maximum load allocated to each slot. Sir, in chaining, what we are doing, sir, in chaining, in chaining is saying कि maximum load allocated to each slot बच्चे. So this is load factor कि each slot पर on an average maximum कितना load allocated होता है. जैसे like here this is 3 and this is 2 but this is null 0. So on an average slot, right, on every slot. So this is load factor, student. So this is load factor. Let this is alpha. Okay, what is the value of alpha, student? What is the value of alpha? It is a constant, student, right? I want to search in chaining. So first search sir index. I want to search in chaining बच्चे. So average search time. Here I am talking about average search time. In chaining, so first you first find the hash function, first apply hash function बच्चे. Hash function is, it is a mathematical function. So search time complexity is what, sir? Order of 1. So आपने first hash function apply किया, you will get what, sir? Sir 0 index आया. So hash function का complexity this one. And on an average every slot पे how many keys, sir? Load factor के equals. So this is equals to alpha. So what is alpha, student? What is alpha? Alpha equals to n by m. Here n is number of keys and m is the size of hash table. Alpha equals to n by m. So my dear student, here n equals to, this is constant m. How many number of keys? So alpha equals to km divided by m. So it will be, sir, k. K is constant. Okay. So on an average, the search time complexity in chaining is order of n. Okay. Order of n. Understood? So in chaining, on an average search time complexity, order of n. All right, student? Fine. So this type of question asked in GATE paper, no need to construct this hash table. No need to construct this hash table. No need, right? This is for subjective paper for your semester exam. But in GATE, no need to construct hash table, student. Directly tell me the maximum, minimum and average chain length. You have to tell the maximum, minimum and average chain length. Yes, yes, student. Directly you can answer this question. So consider a hash table with 9 slot. How many slot, student? 9 slot hai. And hash function is k mod m, right? Okay. The collision are resolved by chaining. The following 9 keys are inserted in the order. So बच्चे अगर इस पे आप 9 slot से hash function कौन सा, ये वाला hash function apply करेंगे, then what are the hash indexes बच्चे? इस पे apply किया तो it will 5 mod 9 5 आ जाएगा. सर 28 mod 9 सर 1 हो जाएगा. अंडरस्टूड. 28 mod 9 डिवाइड करेंगे 27, 1 रिमाइंडर. सर इस पे भी 1 रिमाइंडर आएगा. व्हाट अबाउट दिस 15? 15 पे व्हाट इज रिमाइंडर? 6 स्टूडेंट. सर 20 पे 18 से दिस इज 2 रिमाइंडर. 33 पे
सर 27 33 पे कितना दे रहे हैं? अगेन 6, यस। 12 पे सर 3, 17 पे व्हाट इज द रिमाइंडर हियर? 17 पे कितना रिमाइंडर देगा बच्चे? 8। सो मैक्सिमम चेन लेंथ कैसे बताएं सर, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है? बताइए कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है बच्चे? सर 1, सर 1 एंड 1। सो मैक्सिमम चेन लेंथ कितना है बच्चे? सर 3। व्हाट अबाउट सर मिनिमम चेन लेंथ? बच्चे अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलो 9 अगर निकालेंगे, तो हाउ मेनी रिमाइंडर्स बच्चे? 0, 1, सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो इसमें कौन कौन से रिमाइंडर मिसिंग हैं बच्चे? इसमें देखो 4 नहीं आया, सो मिनिमम चेन लेंथ 0। सर 0 नहीं आया, मिनिमम चेन लेंथ 0। सर 7 नहीं आया, मिनिमम चेन लेंथ 0। सो मिनिमम चेन लेंथ इज 0। ओके, एंड व्हाट अबाउट एवरेज चेन लेंथ? सर एवरेज तो वही होगा ना, कितना होगा? एवरेज कितना निकल के आएगा बच्चे? 1 कितने बार आया बच्चे? सर 1 3 टाइम्स, दिस 1 3 times. How many times 2? Sir 2 1 times, right? 3, how many times 3? 1 times. 4, sir 0 times. 5 1 times. 6, sir 2 times. 7 0 times. 8 1 times. Total sum करिए, इसका कितना आ रहा है? Sir this is 5 and 5 plus 4 9. So divided by size of hash table, so it will be 1. So directly you can answer this type of question. No need to construct hash table, entire hash table. Okay, 301 is the right answer for this question. Now come to next is open addressing. This is known as closed hashing. In open addressing, in entire data is stored inside the table student. Okay. सारा डेटा टेबल के अंदर होगा, inside this table. So what is load factor here student? n is a number of key. n is a number of key. So maximum load factor कितना हो सकता है? maximum key कितनी हो सकती है? Equals to size of hash table. So this is 1. So load factor in open addressing student, this is the load factor value. Okay, maximum load factor 1. Okay. So इसके अंदर हम 3 टेक्निक पढ़ेंगे बच्चे: लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, सर डबल हैशिंग। बच्चे इन पे क्वेश्चंस लास्ट ईयर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आपके डबल हैशिंग से लास्ट 2 ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से भी कभी कभार क्वेश्चन आया हुआ है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर आस्किंग दिस फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, बट लास्ट 2 ईयर से डबल हैशिंग से क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो चलिए फर्स्ट डिस्कस लीनियर प्रॉबिंग। सो इन लीनियर प्रॉबिंग में हम लीनियरली सर्च करेंगे पोजीशन। ओके, कैसे होगा क्या, इस एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। लेट m इक्वल्स टू 10 0 टू 9 हैश साइज ऑफ हैश टेबल, हैश फंक्शन क्या दिया गया बच्चे? की मॉड m, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर प्रॉबिंग बच्चे। लीनियर प्रॉबिंग LP इक्वल्स टू की कॉमा आई इक्वल्स टू HF की प्लस आई मॉड m। सर व्हाट इज आई हेयर फ्रॉम 0 टू 9। आई जो है 0 टू 9, इनिशियली आई कितना होगा? सर 0 होगा।
Initially, this table contain null entries. Initially, inside this table, what is the entry? Sir, null entry here. Okay. null entries होगी बच्चे. क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होगा? लीनियर प्रॉबिंग दिया जाएगा, मे बी आपसे पूछ दिया जाए what is the hash index of 58. Sir, these all key you have to put all key in this hash table, and what is the hash index number of 58. दूसरा क्वेश्चन, how many total number of collision occur? Sir, there are two types of question frame. Sir, what is the hash index of this 58, right? And another question, how many total number of collision? I want to insert all data in this hash table. How many total number of collision occur बच्चे? So this type of question asked in GATE paper. Okay, so let's first discuss. I am applying linear probing for this 25. I am using this formula. Key is 25. Initially I is what, sir? Initially I is 0. So this is what, sir? H of f key 25 plus I is 0 mod of, sir, 10. So ये क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चे? HF25, sir, formula, you can apply this formula for hash function. So ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चे? यहाँ से रिजल्ट क्या आया? 5 plus 0, 5 mod 10, so it will give you 5. So 25 का hash index 5, so 25 is stored at this index. Okay. Similarly, what about 38, sir? Similarly, student 38 comma 0, sir, it gave what, sir? 8. Directly अब आप कर लेंगे बच्चे. 38 आ गया इस पर. 43, sir, linear probing 43 comma 0, it will give 3. So 43 is stored at this index, student, right? What about 68? So 68, 68 पे तो collision हो रहा है. So 68 gives 8 and 38 is also give 8. So this is collision, student. ये क्या है बच्चे? How we can remove collision? So again, sir, choose I value equals to 1. Linearly, you have to check linear slot. Sir, 8 पर अगर collision होगा, then linearly you can check out here this index, sir. So linearly how we can check out? Use this formula बच्चे. So linear probing 68 comma 1. So 68 comma 1 से क्या result आ जाएगा बच्चे? 68 comma 1 से sir 8 plus 1 mod of 10, it gives 9. So 9 perfect empty slot है, so then you can store 68 here. Now next is 79. So this is 9. Sir, again here collision, student, because 9 already stored here, 9. So this is collision. And now how we can remove collision? कैसे करें बच्चे? I के वैल्यू चेंज कर दीजिए. Now I is 1. So linear probing, sir, 79 comma 1. Sir, क्या वैल्यू आएगी? Sir, this is 9 plus 1 mod of 10. So it will be, sir, 0. 0 is empty, yes. So 79 is stored at this position. Now what about 46? Sir, linear probing बच्चे 46 comma 0. So directly it gives 6. So you can store 46 here at 6 index, right? Now I want to store 58 बच्चे. $58, 08. So this is collision. Here student collision occur. Now choose I value equals to what, sir? 1. Now I am choosing I value 1. So linear probing
58 comma 1. Again, sir, this is 9. So here 9 again collision, student. So linearly choose, sir, I equals to 2. So I equals to 2 say it will give, sir, what, sir? 0. And 0 pe be still collision, student. So this is collision. Understood? Now choose I value equals to 3. So linear probing 58 comma 3. So it will give 1. Yes, perfect. So 58 is stored at this position. So what is the hash index of 58? Student, 1. This type of question maybe asked in GATE paper कि 58 is stored at 1 index. Okay. Similarly, sir, 65 comma 0, this is 5. So here collision. So now choose I value equals to 1. So it will give 6. 6 again collision, student. 6 पे already 46 store है. So this is collision. Now choose I value equals to 2. Linear probing 65 comma 2. So it will give 7. So 7 perfectly, 65 store at this position. Okay. What is remaining? Set 20. 0. So here collision. So 20 पे collision हुआ. Now choose I value equals to 1. So again collision is 1. And now linear probing 20 comma 2, it will give 20. So 20 come at this position, right? So in this way, you can insert all the data inside the hash table via using linear probing, and rest of remaining entries contain what's are null. So this blank entry is contain what's are null. So this is hash table, student. Okay. So first question, what is the what is the hash index of 20? So 20 is stored at 2. Yeah, 58 is stored at 1. And how many total number of collision occur, student? In this entire process, how many collision occur, student? So total collision, count total number of collision. Sir, 1, sir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total collision 9 is the total collision, right? So इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है गेट पेपर में. फाइन, स्टूडेंट. So basically in linear probing, what we are doing is, student, in linear probing, we are linearly, sir, I choose I value equals to 0, 1, 2, 3, and this function is linear order function, right? Linear order function 1, 1. So first check at this here is the collision, then next empty slot for check, and this is also filled, then check next, this is also filled, check next. So linearly you are searching, right, empty spot for an element. This is called linear probing. Understood? So now what is the problem here? Sir, कुछ problem दिखाई दे रही है बच्चे? So construct hash table by using linear probing, बच्चे. Construct hash table by using linear probing and tell me what is the hash index of 74? What is the hash index of 74, बच्चे? Where is 74 stored? Yes, student. What is the hash index of 74? What is the hash index of 82? So first you have to construct hash table, bache, by using linear probing. So these are the keys, and this is the hash function given, and linear probing. This is the linear probing formula. So construct कीजिए.
My dear student, initially this has table contain what? Sir, null entries. So this is the formula. You can use this formula. So 61 store at which position? 61 mod 10 equals to 1. So 61 come at this position. Where is 30? 30 mod 10, 30 come at this position, student. Where is 52? 52 has index 2. Sir, where is 43? 43 store at this index. Sir, where is 80? Where 80 will be stored, student? So I am where 80 will be stored, student. So first of all, I am applying hash index for 80. It generate what's at 0. But 0 is already occupied. Then linearly increase I value. Linearly I am searching in where, sir? Linearly I am searching, sir, where? Sir, next slot. Sir, next slot, this is already occupied, right? फिर linearly I am searching next slot. This is already occupied, student. Linearly I am searching this slot. This is already occupied, student. And next I am searching, and sir, linearly this is not occupied. This is empty, null. So you can store 80 here. You can store 80 here, bache. Now, sir, I want to store, sir, 90 here. 90. Sir, 90, first apply hash index, so it gives, sir, 0. But 0, this is already occupied. Now, linearly, I'm checking next slot, bache. Linearly, I'm checking next slot. So, this is already occupied. Linearly, I'm checking next slot, already occupied. This is already occupied. This is already occupied. And 90, 90 store here. Now, sir, 74. 74, student. 74 store, first of all, 74 generate hash index. What directly it generate hash index for this 4. But this is already occupied, student. So linearly I am checking empty slot for this one. So this is already occupied, and 74 I am storing in this position, 74. Sir, what is the problem here, student? Problem क्या है बच्चे? Sir, linearly what is the problem here? Sir, linearly क्या हो रहा है बच्चे? सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठे हो गए एलिमेंट. बीच बीच में कोई गैप नहीं हो रहा है. बीच बीच में कोई गैप होता तो बेटर होता. सब एक क्लस्टर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं. इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चे? देखो प्रॉब्लम आप खुद एहसास करिए. 82, इसको रियलाइज करिए बच्चे, फील करिए. सर 82, आई वांट टू स्टोर 82. देन फर्स्ट अप्लाई दिस हैश फंक्शन. इट प्रोड्यूस व्हाट? हैश इंडेक्स. इट प्रोड्यूस व्हाट, सर? 82, 2. सो बेसिकली द पोजीशन ऑफ 82 इट ये होना चाहिए. लेकिन सर ये तो सर भरा हुआ है. देन आई एम चेकिंग नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट. सर दिस इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, राइट? आई एम चेकिंग दिस नेक्स्ट स्लॉट. दिस इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड. I am checking this slot. This is already occupied. Sir, I am checking this slot. This is already occupied. Sir, I am checking this slot. This is already occupied. कोई बीच में खाली मिल जाता तो अच्छा होता ना. नहीं सर, this is already occupied. This is empty. Right now 82 store at this. बट 82 को होना क्या चाहिए था सर? 2 पे आना चाहिए था 82. बट यू आर स्टोरिंग 82 एट 7th पोजिशन. What is the problem, this student? This is the problem, student. This is the problem, right? This is the problem. Primary clustering. Clustering is what, sir? All data store clustered, linearly clustered. इकट्ठा एक साथ इकट्ठा हो गया. ओके सारा डेटा एक साथ इकट्ठा हो गया. ये क्या है बच्चे? दिस इज प्राइमरी क्लस्टरिंग. अंडरस्टूड? अब बीच में कोई जगह खाली नहीं है. बीच बीच में कुछ होल होते, कुछ जगह होती तो सर्च टाइम इंक्रीज नहीं होता. आई वांट टू सर्च 82. सर 82 मिलना कहाँ चाहिए था? 2 पर. लेकिन 2 पे तो नहीं मिला. सर आगे देखो, आगे मिल जाता है. ये तो सर 82 का सर्च टाइम इंक्रीज हुआ ना. सर 74 का सर्च टाइम इंक्रीज हुआ. अंडरस्टूड? तो 74 एंड 82 इनका सर्च टाइम इंक्रीज हुआ ना. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 80 एंड 90, सर 80 एंड 90 बोथ फॉलो द सेम पाथ, राइट? 80 and 90 I applying hash function, then both give hash index 0, right? Okay, then linearly I'm checking another slot. So it gives 1, 90 is also gives 1, right? So linearly I'm again applying, so it gives 2, 90 is also 2. So
सर ये दोनों को हैश, अगर हैश फंक्शन लगा रहे हैं तो दोनों हैश इंडेक्स क्या जनरेट कर रहे हैं, सेम हैश इंडेक्स फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके अप टू लास्ट तक। तो ये प्रॉब्लम, इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग से not only 80 and 90 suffer, but also 82 and 74 is also suffered, student, right? Same group के member 80 and 90 is suffered, okay fine, चलिए, लेकिन why 82 suffer, why 74 suffer? Sir 82 is a different group, both generate the same hash index from beginning से लेके up to last तक, so that's why 80 and 90 suffer, it's okay, right? Not okay, but चलो चलेगा। But what about 82 and 92? 82 generates hash index 2, right? 74 generate hash index 4. Still both is also suffers, right? सर ये तो सफर कर ही रहे हैं, इसके अलावा बाहर के लोग भी सफर कर रहे हैं जिनका हैश इंडेक्स डिफरेंट है। सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर, दिस इज प्राइमरी क्लस्टरिंग। ड्यू टू प्राइमरी क्लस्टरिंग सर्च टाइम इंक्रीज, बच्चे। ड्यू टू प्राइमरी क्लस्टरिंग सर्च टाइम इंक्रीज, बच्चे। Search time increase, right? So primary clustering is a problem, right? This is a problem, student. प्राइमरी क्लस्टरिंग से सारे इकट्ठे एक जगह जो हो गए ना, लीनियरली, बीच बीच में कोई होल नहीं है, so 80 and 90 suffer as well as some different group member is also suffered. So primary clustering is more dangerous, student. So due to primary clustering search time increase. If two keys are mapped on the same starting location of the hash table, then they both follow the same path in linear manner. Because of this, the search time complexity will increase, right? This is all known as primary clustering. This is known as primary clustering, bache. Okay. To avoid this problem, the quadratic probing will be used. We'll discuss shortly. Deletion is difficult because of one element will create trouble to the other element. Sir, why deletion is difficult here? इसको सम नोट बच्चे इसके बारे में देखिएगा। डिलीशन विल क्रिएट द प्रॉब्लम टू अदर कीज but will manage by storing new symbol like hash. If more number of deletion occur, then perform rehashing. Okay, so ये क्या चीज है, इसको यहाँ समझते हैं बच्चे। Sir, I want to delete 30. Then what should I do for this, student? Sir, I want to delete 30 बच्चे. Then what should I do, sir? Initially this contain what, student? From beginning से ये जो rest of entries क्या है बच्चे? Null entries हैं. Sir, if I delete this 30, बच्चे, okay, and if I insert null here, then what is the problem here? Sir, I want to search 80. Then initially I am applying hash function. It will give hash address 0 बच्चे. So 0 पे null मिल गया. So 0 पे this is null. This is saying unsuccessful for search. 80 not exists in this hash table because null indicate what? Initially null indicate absent of information, right? If first is null, then it indicate कि sir 80 not exist here. Okay. So what is the solution for this, student? Solution for this: don't use null. Use different symbol. Okay. So use different symbol, student. Let I am using different symbol hash.
So I am using different symbol hash, student. Hash indicate कि earlier there was an element, don't stop search, go ahead, maybe 80 exist in this hash table. My dear student, now I want to search 80. So 80 पे hash index लगाया, क्या आया सर 0, but 0 contain this is hash. तो hash indicate what कि अर्लियर देयर वाज एन एलिमेंट, डोंट स्टॉप सर्च, जो अभी डिलीट हुआ है, आप आगे जाइए, आगे मिल सकता है 80 आपको। ये स्टॉप नहीं करेगा, नल क्या कर देगा, सर्च स्टॉप कर देगा। हैश क्या बताएगा कि पहले एलिमेंट था जो डिलीट हुआ है, इसलिए मैं आया हूँ, आप सर्च स्टॉप मत करो, आगे जाइए, आगे आप हो सकते हो। तो 80 जैसे ही आपने सर्च किया, सो 80 को वो हैश के 80 सर्च कर रहे हैं, तो 80 यहाँ आके मिल जाएगा। डोंट स्टॉप सर्च, गो अहेड, आप आगे जाइए, यस 80 मिल गया। तो इस तरह से बच्चे आप डिलीट कर सकते हैं। बट another problem here student, another problem student, uh, बच्चे ग्राफ थ्योरी नॉट कवर्ड इन डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ कवर्ड इन एल्गोरिथम पोर्शन। डॉक्टर खलील सर विल टीच यू ग्राफ, अंडरस्टूड। खलील सर आपको ग्राफ पढ़ाएंगे बच्चे। सर आई वांट टू डिलीट 61 स्टूडेंट्स, सो इफ यू डिलीट 61 देन you can insert hash here. Sir, I want to delete 52. If you insert here hash. Sir, 43. You can insert here hash. 80. You can insert hash. 90. You can insert hash. 74. You can insert hash. This entire hash table contain what, sir? Only 82. Only 82. Now, sir, I want to search 82. Then what? Sir, if you search 82, then this is saying कि सर सर्च 82, हैश इंडेक्स लगाया, कहाँ आया 82, दिस 2 इंडेक्स बच्चे, 82 का इंडेक्स क्या आया 2, तो 2 कंटेन व्हाट सर हैश, एंड दिस इज हैश मींस व्हाट कि अर्लियर देयर वाज एन एलिमेंट, डोंट स्टॉप सर्च, गो अहेड, आगे जाओ 82 मिल जाएगा। सो चलो सर आगे चले, यहाँ पे फिर क्या मिल गया हैश, यहाँ पे हैश मिल गया, हैश कहेगा आगे जाइए, आगे जाइए सर, आगे आप जाते जाते कहाँ तक चले जाएंगे, पहले यहाँ गए, ये सर्च किया, फिर यहाँ भी सर्च 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 सर्च, एंड यू गॉट 82, बट द सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हैश एंट्री। ओके, so what is the solution for this student? The solution is you have to redistribute hash table. Redistribute this entire hash table student. If you redistribute this entire hash table, then and this hash table contain 82 only, 82 at which index number, this one, and rest of all entries is what sir, null. So now you search 82, then in order of one time, in this case you search 82, now you search 82 in constant time, right? But you search 82 here, then search 82, it will take near about, sir, maybe on an average, if I talk about, size of hash table. Okay, so deletion is complex. Therefore, student, therefore deletion is complex because you have to redistribute. So therefore deletion is complex.
अंडरस्टूड. वाई डिलीशन इज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज डिलीशन के कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. ज़्यादा डिलीशन हो गए तो भी सर्च टाइम इंक्रीज हो रहा है. देन यू हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट हैश टेबल. सो दैट्स वाई डिलीशन इज कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑफ यू हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट हैश टेबल. सो understood. So this is the problem. Okay. Now primary clustering, if two keys are mapped on the same starting location of the hash table, ये already हमने discuss कर लिया है बच्चे. So due to primary clustering, दो बार आ गया, इसको एक बार लिख देते हैं. Due to primary clustering, same group as well as other group suffering, but due to secondary clustering, only same group member are suffer. क्या बात है सर इसमें? ये कह रहा है सर प्राइमरी क्लस्टरिंग से सर 80 एंड 90 तो सफ़र करेंगे, ठीक है, ओके, बट फॉर 82 एंड 74 इज ऑल्सो सफर्ड स्टूडेंट. सो दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज मोर डेंजरस. ओके. नाउ हाउ टू रिमूव प्राइमरी क्लस्टरिंग? देन वी फॉर प्राइमरी क्लस्टरिंग के लिए वी विल यूज क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग स्टूडेंट. लेट डिस्कस सम पीवाईक्यू क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? एवरीवन रिप्लाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Yes, student. What is the answer? This is the GATE PYQ. Such type of question asked in GATE exam. Yes, option C बच्चे. सर 12 2 पे आ गया, 18 8 पे आ गया, ठीक है, 13 सर 3 पे खाली स्लॉट है, आ जाएगा. ओके. फिर 2 नेक्स्ट पे लीनियर प्रॉबिंग से सर ये 2 एंड 3 दोनों फिल हो गए. 2 इस पे आ जाएगा, करेक्ट. 3 इस पे आ जाएगा. सर 23 सर सी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट. यस, सी इज राइट आंसर. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ये गेट 2025 का पीवाईक्यू बच्चे, लास्ट ईयर पीवाईक्यू है. ओके. गेट 2025 पीवाईक्यू. वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट. तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है? कंसिडर हैश टेबल ऑफ साइज 10 विथ इंडेक्सेस 0 to 9 विद द हैश फंक्शन hx इक्वल्स टू 3x. हैश फंक्शन क्या है बच्चे? 3x mod 10. दिस इज द हैश फंक्शन. ओके.
Where linear probing is used to handle collision, the hash table is initially empty and the following sequence of keys is inserted into hash table. Okay, the indexes where the key 14 and 15 are stored. You have to tell indexes of 14 and 15. Okay. The keys given is what, sir? Keys, sir, 1, 4, 5, 6, 14, 15. So hx equals to x. These are the key 3x. What is 3x, student? 3x 3 times, bache 3, and this is 12, and here this is 15, 18. So this is 3x. Okay, and in 3x पे mod 10, 3x mod 10. What is hx? So 3 mod 10. So this is 3, and it gave 2, student, and 15 mod 10 5. So this is 2 and 5. So these are the hash indexes. Okay. Now you can remove this. Don't confuse. Okay. So 1 store at 3 index, बच्चे. 1 store कहाँ पे होगा? 3 index पर. This is 3 index as index 3. Sir, 4 key store at 2 index. 4 store at 2 index, बच्चे. 5 store at this 5 index. Okay. Now 6 at 8 index. Okay. Sir, 14 at 2 index. Sir, 2 is already occupied. Sir, 14 का क्या आ रहा है? Sir, 2 आ रहा है, but 2 is already occupied. So linear probing say I'm checking empty slot. So this is fill. So I'm checking another empty slot. Yes, 14 come at this position. What about 15, student? So 15 ka hash index. So this is 5. So 5 is already occupied. Linear probing say 15 come at next slot. So सर 14 का हैश इंडेक्स 4 है एंड 15 का 6. सो 4 6 डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. What is the answer for this question, student? Yes, everyone reply answer for this question. A hash table of length 10 use open addressing with hash function ℏk mod 10 and linear probing. After inserting 6 value into a empty hash table, the table is shown below, right? Which one of the following choice give a possible order in which the key value could have been inserted in the table? Let I try first one, student. 46 mod 10. The hash function 46 mod 10. Then 46 come at this position, na? Yes, correct, sir. 42 come at this position 2 पे. Fine. 34 correct at this position, no problem at all. But 52 सर कहाँ पे आएगा? सर यहाँ आना चाहिए था. 52 यहाँ पे आ जाएगा, जबकि यहाँ क्या है? 23 है. So this is wrong, student. This is not correct. What about B part? So now let's check B part, बच्चे. Check B part. Sir, first is 34. So 34 4 index 42 come at this position. 23 correct sir, सही आ रहा है अभी तक. 52 सर 52 2 आएगा सर. 52 यहाँ आ जाएगा. 33 सर 33 यहाँ पे आ जाएगा, जबकि 33 होना है 7th पे. So this is also wrong.
What about C? Sir, 46, first apply 46, so 46 this one, 34 correct sir, this one 42 here, and 23 sir, 23 this one, 52 2 पे आएगा, हैश इंडेक्स यहाँ से लीनियरली चेक करेगा, एम्प्टी स्लॉट सर 52 come at this position and 33 come at this position. Absolutely correct student, absolutely correct, right? So C is the answer. What about D? Check D also. Sir, check D also. 42 सर, 42 कम एट दिस पोजीशन, ठीक है. 46 कम एट दिस पोजीशन. 33 सर, 33 कहाँ आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे आ जाएगा, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए? 23 होना चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अंडरस्टूड? This is the possible order. In the next slide, I am asking you how many possible such order possible, student. How many possible order possible, so that we can consider this type of table, right? This is one order, one sequence. ऐसे कितने sequence possible हैं जिससे इस तरह की table construct हो? Okay? तो ये बच्चे next question है, इसका आंसर बताएं. Yes, student. How many such sequence possible? Sir, 42, 23 and 34. 42, sir, 23 and 34. Right? You can uh, any combination, right? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन सर. अगर कोई भी कॉम्बिनेशन करेंगे ना तो 42 2 पे ही आएगा, 23 3 पे ही आएगा, 34 4 पे ही आएगा. कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लें बच्चे, राइट? एनी कोई भी अरेंजमेंट कर लें, लाइक चाहे आप 42 34 23 कर लीजिए, या 23 34 42 कर लीजिए, या 34 42 23 कर लीजिए, या 42 23 34 कर लीजिए. सर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑलवेज 42 2 पे आएगा, 23 3 एंड 34 3 पे, राइट? परफेक्ट सर, नो इशू, इनमें कोई दिक्कत नहीं है. But you need 52, you need 52 at this 5 index, student. So 52 के लिए सर 52 must be after this. सर 52 इसके बाद होना चाहिए. 52 से पहले 46 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट सर 33 इसके बाद आना चाहिए. 33 46 इसके बाद नहीं आ सकता, राइट? सो अगर 46 33 से पहले होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी है. व्हाट अबाउट 46 स्टूडेंट? 46 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 46 बच्चे यहाँ आए तब भी 6 पे ही जाएगा वो, राइट? 46 चाहे यहाँ आए, कहाँ जाएगा बच्चे? 6 पे. 46 इस जगह आए तब भी कहाँ जाएगा? 6 पर. 46 यहाँ आए, कहाँ जाएगा बच्चे? 6 पर. 46 चाहे इस इधर जगह कहाँ जाएगा सर? 6 पर. 46 चाहे यहाँ आए, कहाँ जाएगा? 6 पर. बट 46 अगर यहाँ आया तो दिस इज रॉन्ग. अंडरस्टूड? वो 33 पहले आ जाएगा, 46 बाद में आएगा, सो ये रॉन्ग है. ओके, दिस इज रॉन्ग. सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी फॉर 46?
46 यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। सो टोटल पॉसिबल सीक्वेंसेस, सर टोटल अरेंजमेंट ऑफ दिस, सर फैक्टोरियल 3, कितने तरीके से बच्चे ये हो सकता है, फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज। एंड हाउ मेनी पोजीशन फॉर 46 के लिए, 1 2 3 4 एंड 5, सो इट विल बी व्हाट सर, 6 into 5, 30, 30 is the answer for this question, understood? 30 is the right answer for this question, all right. Okay, so इसमें little bit mathematics concept use, understood? Basically hashing with mathematics, some mathematics के साथ hashing आता है, तो you know the concept about permutation, combination, arrangement, probability, तो hashing maths के साथ combination से questions आपके बनते हैं, okay? So 30 is the answer. Now, what is the answer for this question? Yes, student. An advantage of chained hash table external hashing over the open addressing scheme is what? Sir, in chaining, deletion is easier, right? You can delete or insert anytime, no problem at all. But whereas in case of open addressing, deletion is complex, right? So, क्या होगा answer? Sir, answer is deletion is easier. Okay. Now, next concept, quadratic probing. Sir, in quadratic probing, this is the hash function student. I am using let, जरूरी नहीं है बच्चे यही हैश फंक्शन हो, आपको गेट के एग्जाम में कोई भी हैश फंक्शन दिया जा सकता है। m equals to 10, 0 to 9, this is the size of hash table, and this is quadratic probing formula QP KI. So this is not बच्चे कि यही formula हमेशा होगा। Quadratic probing means what? Quadratic probing means the polynomial this degree is quadratic degree. Student, it is not compulsory कि always this is formula. Maybe HF की plus C I square हो सकता है. This term is missing, right? Understood? So this is a quadratic problem. HF key plus C1I plus C2I square, quadratic degree polynomial, C1I square mod m, where C1 C2 is what? Sir, C1 C2 is a constant. C1 C2 is a constant. Sir, it is always 1 1. No, ये डेटा आपको गेट के पेपर में गिवन होगा बच्चे कि C1 1 है, C2 1 है, या C1 10 है, C2 20 है, वट एवर जो भी एवरीथिंग दिस डेटा आपको गिवन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, लेट आई अज्यूम C1 equals to 1 and C2 equals to 1, and I start from 0 to up to size of hash table. Okay. So let I store, these are the keys stored in the hash table. So this is hash table student. Tell me what is the hash index of 78? First type of question may be asked in gate paper बच्चे 78 का hash index क्या होगा? I am applying quadratic probing and total number of collision कितने होंगे इस process में? Okay.
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग 25,0 बच्चे। सो 25,0 इक्वल्स टू HF 25 प्लस C1 कितना है बच्चे 1 इंटू आई कितना है 0 प्लस 1 इंटू 0 मॉड ऑफ 10। सो ये क्या रिजल्ट देगा बच्चे, आप निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा सर 5। सो 25 स्टोर एट दिस 5 इंडेक्स। ओके, सिमिलरली सर 25 डन हो गया। Quadratic probing 98,0, so this is 8. Quadratic probing sir 57,0, this is 7. And so 98 8 पर आ गया, 98 57 7 पर। Quadratic probing 75,0, so this gives 5. So here collision student, collision occur. Now if collision occur, then choose I value equals to sir 1. If choose I value 1, then sir this data is 5 and C1 is 1, C2 is 1, I is 1, so 1 plus 1. So this is what sir 7, right? 7 पे again collision, 7 पे this again collision student. So if again collision, then choose I value equals to 2 student. If choose I value 2, so 5 plus C1 into I 1 into 2 plus 1 into 2 square mod of 10. So it will give what sir 5 plus 2 and 2 4. ये क्या है 4 plus 2 6 plus 5 11 mod 10, this is 1. So 75 store at this first index बच्चे, 75 store at first index. Understood? Similarly sir quadratic probing 97,0, इसको 1 यहाँ लिख देते हैं बच्चे। So this is collision. (97,1) रखा, so it will be what sir, it will give 2 9, 7 plus 2 9, yes 97 store at this position. Okay, what about 18? So this give 8, so 8 पे collision हो रहा है। Now I choose quadratic probing 18,1. So 18,1 पे क्या आ जाएगा बच्चे, 8 plus 2 10, 10 mod 10 0, yes this is 0. So 18 store at this index. Okay, so where is 78 बच्चे? So quadratic probing 78,0, sir 78,0 gives sir 8. So 8 पे collision हुआ, so this is collision here. So if collision, then choose quadratic probing 78,1. 78,1 से again plus 2 add हुआ, so it will be sir 0. So 0 पे collision बच्चे। ये पता चल रहा है ना कैसे collision हो रहा है। Now choose I value equals to 2.
choose I value 2, then this data is what sir? If you choose I value, तो आप 6 ऐड कर देंगे बच्चे उसमें. 8 plus 6 14. 8 plus 6 14. Yes, 78 store at this 4 index. 78 is stored at 4 index, right? Okay, very good. Where is 46? 46 directly यहाँ आ गया. Rest of all entries contain what sir? Null entries. So this is hash table student by using quadratic probing. Understood? By using sir quadratic probing से. And how many total number of collision occur in this process? Total collision कितने हुए बच्चे? Total number of collision sir 1 2 3 4 5 6. Total number of collision is 6 student. Okay. So this is hash table. In this way, you can insert, sir, you can use quadratic probing, बच्चे, right? What is the problem in quadratic probing? Sir, problem in quadratic probing क्या problem है? Sir, there are two problems here. Again, quadratic probing में secondary clustering problem है, and some cases में quadratic probing में hash index आपको नहीं मिलेगा, right? Some cases में quadratic probing में hash index मिलेगा ही नहीं. Okay? For example, अगर मैं इसकी बात करूँ, so बनाइए इसको. m equals to 10 है बच्चे, and hash function use quadratic probing. Quadratic probing formula. Use quadratic probing formula and tell me. Construct hash table and tell me, sir, where is 80 stored? Where is 80 stored, student? Tell me the hash index of 80. Is 80 stored or left out in the hash table? Understood? Can you store 80 on the hash table by using quadratic probing, or 80 is left out? Initially, this hash table contain null entries, bachche. So let first 41 come at this position. Now 60 come at this. So 82, directly 82, this one 93. Sir, where is 70, student? Sir, where is 70? So 70 has index लगाया. First is sir 0. Then this collision, then you choose I value equals to 1. If I equals to 1 आपने अप्लाई किया तो क्या आएगा बच्चे 70 का? सर 2 ऐड हो जाएगा, 0 plus 2 2. So next search for सर 2 index पे, right? Next search for, after this you are searching next for 2. So 2 is already occupied. Then choose I value equals to 2. If you choose I value equals to 2, then what will happen, student?
sir, I value equals to 2 into 1 plus 6, add 6 here. Sir, 6, this search by data and 6 here, and you can store 70 here. Okay. Now, sir, 80, where is 80 stored, student? Where is 80? So, apply hash function for I equals to 0, it gives the 0, sir, 0 collision. Then choose I value equals to 1, then it's search, sir, again collision. Then choose I value, sir, 6, I equals to, sir, collision किस पे हुआ? I equals to 2 पर भी. choose I value equals to 3. choose I value equals to 3 जब आप इसमें चूज करेंगे बच्चे, तो ये आपको क्या आएगा? सर 3 plus 9. This is 3 plus 9, 12. 12 plus 0 is 12 mod 10, 2. So again after this, आप फिर से किससे सर्च करेंगे? After this you are again searching with this 2 index. Okay, fine. उसके बाद I की वैल्यू आपने 4 लिया, तो 4 से कितना आएगा? 4 plus this 16, 20, and 20 plus 2, 22. क्या रिजल्ट हुआ? कितना आया बच्चे? I की वैल्यू अगर आपने 4 ले लिया, तो दिस इज 4 प्लस 16, 20, एंड इट गिव्स व्हाट सर? 0. तो फिर क्या आ रहा है? 2 से सर्च हुआ, I इक्वल्स टू 5 ले लिया, तो 5, 25 प्लस 5, 30, एंड बोलो भाई. सो अगेन कॉलिजन होता रहेगा बच्चे. 80 की पोजीशन आपको नहीं मिलेगी, समझे? 83 पे 2 आ गया सर, 4 पर क्या आएगा? क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग. कितना आ रहा है बच्चे? बताओ. नेक्स्ट कितना आ रहा है? I equals to 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो इट विल गिव व्हाट? So this data is 0, 4 plus this is 16, 20 mod 10. 0 आ रहा है क्या? So after this you search here 0. 0 is already occupied. So now quadratic probing 80,5. So this is 0 plus 5 plus 25. क्या कहीं मेरे से एरर हो रही है क्या? मिस्टेक हो रही है बच्चे? यस. नो प्लेस. नो प्लेस, इसका जगह ही नहीं मिल पाएगा बच्चे. 80 के लिए जगह नहीं मिल पाएगा. ओके. फिर से 0 आया, फिर हमने I की वैल्यू कितना रखा? सर I की वैल्यू 6 रखा. 6 प्लस 36, 42. फिर 2 से सर्च हुआ. ओके. सो देर इज नो प्लेस. 80 लेफ्ट आउट. 80 left out. This is the problem in quadratic probing. In some scenario, some left out बच्चे. 80 not store. 80 left out, not stored in hash table. You cannot store by a quadratic probing बच्चे. Okay. And one more problem here, sir. If let's suppose 80 is stored somewhere else in the memory. Let's suppose some different number is stored somewhere else in the memory, and I want to search 70 and 80. Then both the search time complexity of 70 increase ना. फर्स्ट 70 कम, देन 70 सर्च टाइम इंक्रीज. बट बीच बीच में इसमें क्या है सर? एम्प्टी होल हैं बच्चे. बीच बीच में देखिए ये क्या है सर? एम्प्टी होल हैं. अगर कोई इफ एनी की जनरेट हैज इंडेक्स 4, देन यू कैन स्टोर हियर, राइट? अगर 74 होता बच्चे, तो 74 यहाँ स्टोर हो जाता, नो प्रॉब्लम. 74 नॉट सफर्ड. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ना व्हाट आई एम सेइंग? अगर कोई बच्चे एलिमेंट 45 होता, तो वो यहाँ स्टोर हो जाता, नॉट सफर्ड. वेयर एज इन प्राइमरी क्लस्टरिंग सर एकदम सटा हुआ प्राइमरी क्लस्टरिंग था, बीच में बिल्कुल भी होल नहीं था. तो दैट्स व्हाई प्राइमरी क्लस्टरिंग इज मोर डेंजरस. प्राइमरी क्लस्टरिंग सफर सेम ग्रुप मेंबर एज वेल एज फॉर डिफरेंट ग्रुप मेंबर आल्सो सफर्ड इन प्राइमरी क्लस्टरिंग. बट
बट इन क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग बीच बीच में एम्प्टी होल्स हैं, सो यहाँ केवल ओनली बोथ मेंबर सफर जो सेम हैश इंडेक्स दे रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप मेंबर is not suffered, right student? For example 74 you can store 74, no problem. 45 you can store 45 here, बट इन प्राइमरी क्लस्टरिंग में ये सारा एक साथ इकट्ठा था, आप स्टोर नहीं कर पा रहे थे बीच में, राइट? सो प्राइमरी क्लस्टरिंग इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू सेकेंडरी क्लस्टरिंग, अंडरस्टूड? फर्स्ट पॉइंट दिस वन. दूसरा, एंड दिस प्रॉब्लम इज नॉन एज व्हाट सर? सेकेंडरी क्लस्टरिंग. ओके, ये जो मैंने जो प्रॉब्लम सर्च टाइम इंक्रीज हो रहा है 70 का, ये क्या है? सेकेंडरी क्लस्टरिंग है. और इसका दूसरा प्रॉब्लम क्या है? 80 लेफ्ट आउट, नॉट स्टोर इन द टेबल. सो सेकेंडरी क्लस्टरिंग क्या चीज है एंड व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग? क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में बच्चे सेकेंडरी क्लस्टरिंग आएगा. दूसरा क्या होगा? सम केसेस में कोई एलिमेंट में भी स्टोर ना हो पाए. ओके, so if two keys are mapped onto same starting location in the hash table, then they both follow the same path in quadratic manner. Because of it search time complexity increase and right, ये secondary clustering है बच्चे. Secondary clustering is smaller than primary clustering. This is important. Secondary clustering is smaller than primary clustering. क्यों सर? क्योंकि secondary clustering बीच बीच में empty holes हैं, तो आप इनको utilize कर सकते हैं different members के लिए, right? बट प्राइमरी क्लस्टरिंग में एक साथ इकट्ठा हो गया था पूरा डेटा. ओके, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी विल यूज डबल हैशिंग, विल बी यूज्ड. इसमें भी सेम सर डिलीशन, सिमिलर डिलीशन विल क्रिएट द ट्रबल टू अदर की जस्ट लाइक इन लीनियर प्रॉबिंग, बट हैंडल बाय स्पेशल सिंबल, हैंडल बाय स्पेशल सिंबल जस्ट लाइक इन लीनियर प्रॉबिंग. ओके, सो दिस इज सेकेंडरी क्लस्टरिंग बच्चे. नाउ कम टू डबल हैशिंग. I want to remove secondary clustering also, then we will use double hashing. So in double hashing we will use two hash function बच्चे. Let this is the first hash function and this is another hash function. This hash function आपको गेट के पेपर में दिया जाएगा बच्चे. ये जरूरी नहीं कि यही hash function हो अब always. ये डेटा आपको गेट के पेपर में गिवन होगा. I am using two different hash function. This is first hash function, second hash function. Okay. And this is the double hashing formula. Double hashing की I equals to sir hf1 first hash function plus I hf2 की mod m. Okay. Initially I कहाँ से start होगा बच्चे? Initially I start from 0. If I is 0 then this term is inactive बच्चे. I 0 होगा, ये 0 हो जाएगा. This is inactive. Only simple hash function की तरह काम करेगा. When I is 1, if collision occur then choose I value equals to 1. If you choose I value 1, then this second hash function is also active. If both is active, then generate uniqueness, right? Unique hash indexes. Okay, student. Okay, so इन की को hash table में fill करिए. क्या आ रहा है? Fill this data on hash table. Double hashing 25,0. Initially I 0, this is inactive. डीएक्टिव हो जाएगा बच्चे, केवल हैश फंक्शन के बराबर है. 25 mod 10, m कितना दिया गया है? 25 mod 10, so this is 5. Okay. So 98 is stored at this position. $57 is stored at this position, right? डबल हैशिंग सर 75,0. 75,0 में क्या आएगा सर? 1. दिस इज कॉलिजन. हाउ टू हैंडल कॉलिजन? अब बच्चे कॉलिजन आ गया. सो हाउ वी कैन हैंडल कॉलिजन? चूज आई वैल्यू इक्वल्स टू 1. If you choose I value 1, then second hash function is also activate. So first hash function, this gives 5,
plus I is 1, and second hash function is what, sir? This is the second hash function. 1 plus key mod m minus 2. Key is what, sir? 75. Mod of m minus 2 means 8. M is 10 na? Yes, m minus 2 is 8. And mod of what's a 10? So ये क्या रिजल्ट आएगा? 5 plus 1 into 1 plus 8, 8 9 is 72, so 3 remainder. So it will be, sir, 5 plus this is 4 into 1 4 9. So 75 is stored at 9 index. ऑल राइट, तो इस तरह से आप टेबल को फिल करेंगे. नाउ 97 और देख लेते हैं, बाकी की टेबल आप फिल करिएगा. 97 कैसे कहाँ स्टोर हो रहा है सर? नाइन्टी सेवन कॉमा जीरो गिव्स व्हाट स्टूडेंट? 7. सो 7 पे क्या हुआ सर? कॉलिजन हो गया. सो नाउ चूज आई वैल्यू इक्वल्स टू 1. सर आई वैल्यू इक्वल्स टू 1 चूज किया तो कितना और ऐड होगा 7 में बच्चे? बोलो सर. 4 ऐड हो जाएगा ना? 4 होगा? 4 क्यों होगा? ज़्यादा होगा ना? डबल हैश फंक्शन है बच्चे ये. 7 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 97 मॉड 8. 97 मॉड 8 ये वाला टर्म सेकेंड हैश फंक्शन. 97 मॉड 8 कितना आएगा बच्चे? बोलो. 12 8 96. यस 1 ही आएगा. ओके 12 8 जा 96. 1 रिमाइंडर. So it will give what is 7 plus 2 is 9. So 9 पे again collision है. This is again collision student. Now check one more times. 2 के लिए चेक करिए बच्चे. 7 plus this 2 into 2 4. So ये क्या आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा. So 97 स्टोर एट दिस इंडेक्स स्टूडेंट 1 पर. ओके इस तरह से बच्चे इस टेबल को फिल करिए. राइट इस तरह से आप इस टेबल को फिल करेंगे. अंडरस्टूड? सिमिलरली फिल दिस इंटायर टेबल. सिमिलरली यू फिल दिस इंटायर टेबल. ओके अब इस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो गेट पेपर में आया हुआ है. एक या दो क्वेश्चन इनको कर लेते हैं. लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बच्चे. लास्ट ईयर गेट पी वाई क्यू, गेट 2025 पी वाई क्यू. ओके आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपके गेट पेपर में बनते हैं. ओके 99% प्रोबेबिलिटी इसी तरह के क्वेश्चन की है बच्चे. राइट सो हमें किसको करना चाहिए पहले? जो मेजोरिटी है जिसके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं. ओके सबसे ज़्यादा लीनियर प्रॉबिंग से क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद अब डबल हैशिंग से भी पूछे जाने लगे. क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का भी आ सकता है. तो चलिए बताइए इसका आंसर. In a double hashing scheme, H1 K mod 11, H2 1 plus K mod 7 are the auxiliary hash function. The size M of the hash table is 11. The hash function for the ith probe in the open addressing table H1K plus I H2K mod M. The following keys are inserted in the given order 63, 50, 25, 79, 67, 24. The slot at which 24 get stored is. क्या होगा?
हैश टेबल. So double hashing formula for open addressing. This is the double hashing formula, बच्चे. Mod m. What is m, student? In this question, the size of hash table m कितना दिया गया है सर? 11. So यहाँ लिख लीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे. m equals to 11 गिवन है डेटा में. ओके. एंड आई वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? आई वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 'okay'. What is first hash function, student? This is first hash function, and here this is second hash function. Mod 7 है, इधर ध्यान रखना है इस बात को. This is 7. Okay. Now double hashing 63,0 डायरेक्टली ये क्या देगा बच्चे? इनिशियली 3. तो 63 come at this position, right? This is done. Now double hashing, sir, 50,0 25,0 79. is stored at this position, whereas double hashing 67,0. So this is 7. सर कोई दिक्कत नहीं आ रही? इतना सिंपल क्वेश्चन. ओ बच्चे आपने भी बताया नहीं बच्चे. मॉड 11 है, मॉड 11 अंडरस्टूड. मॉड 10 नहीं है, मॉड 10 नहीं है. सारा गलत हो गया. हो ही नहीं रहा अब. बच्चे ये 63 मॉड 11 है. अंडरस्टूड. ये गलती गेट में मत कर देना. एक ऑप्शन वो भी मिल जाएगा आपको. नहीं, 63 मॉड 11 क्या होगा? 11 6 66 एंड कितना आएगा? 66. 11 5 जा 58. 11 5 जा 55. 55 5 3 8 रिमाइंडर आ रहा है बच्चे यहाँ पे.
8 तो 63 8 पर आएगा। 63 का रिमाइंडर कितना आया? 8 आया बच्चे, करेक्ट कर लेना। डबल हैशिंग एंड दिस इज 50 50 comma 0 11 11 for the 44, so it gives sir 6 remainder. So 50 come at this position बच्चे। क्या हुआ? फिफ्टी का कितना आ गया सर? 56 पर आएगा। नाउ फिर डबल हैशिंग फिर क्या है? दिस इज डन डन। नाउ 25 25 comma 0 equals to, it gives at 11 2 जा 22 3 remainder। 25 is stored at this position, right? Where is 79? Where is 79 बच्चे? 79, 11 7 जा 77 sir, it give remainder 2, तो 79 is stored at this index। Okay, where is 67? 67 comma 0 sir, 11 6 जा 66, it gives 1 बच्चे, remainder is 1, तो 67 store at this position। Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं सर यहाँ तक। नाउ सर 24, 24 comma 0 sir, it gives what sir? सर 2, 11 2 जा 22 सर 2 आया सर, 2 पे कॉलिजन हो गया, सो दिस इज कॉलिजन। यहाँ पे कॉलिजन आ गया बच्चे। नाउ डबल हैशिंग, चूज आई वैल्यू इक्वल्स टू, चूज आई वैल्यू 0 से 1। अब आई वैल्यू इक्वल्स टू 1 आप चूज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? टू प्लस दिस आई इज 1 इंटू सेकेंड हैश फंक्शन बच्चे। सेकेंड हैश फंक्शन, दिस इज द सेकेंड हैश फंक्शन 1 प्लस के मॉड 7। 1 प्लस, क्या हो रहा है यार? 1 ही गायब हो गया। 1 प्लस के मॉड 7, सर के इज 24, 24 मॉड 7 कितना हुआ? और मॉड ऑफ लास्ट में कितना करना है आपको? 11। तो 24 मॉड 7, 7 3 जा 21 एंड 3 रिमाइंडर, 1 प्लस 3 इज 4 4। ये रिजल्ट कितना आएगा बच्चे? 4 मॉड ऑफ सर 11, सो इट विल गिव सर व्हाट सर 6। 6 पे अगेन कॉलिजन है बच्चे। ये क्या आ रहा है? 6 6 पे क्या हो रहा है? अगेन फिर से कॉलिजन हो रहा है। 50 स्टोर है ना? देन चूज आई वैल्यू इक्वल्स टू 2। if you choose I value 2, so 2 into 1 plus 24 mod of 7 mod of 11, so this is 2 plus 4 into 2 sir 8 mod 11, so it will give sir 10, right? So 24 is stored at this position, right? So what is the hash index of 24 bache? So answer is what sir? 10। So 10 is the answer for this। Rest of all entries क्या होंगे बच्चे? सर null।
So in this way you can fill entry. So right answer is 10. All right. ये होमवर्क है, कर लीजिएगा। गेट का पीवाईक्यू है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है बच्चे, थोड़ा सा सोचिएगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो ट्राई योरसेल्फ। होमवर्क, सो दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल इन टुडे क्लास बच्चे। आज हमारा डीएसवी कंप्लीट हो गया है। ओके, so we have in this series we have covered Python programming. First 7 lecture we have covered Python programming, and after this we have covered sir data structure student. Okay, स्टूडेंट अगर आप ये सारी प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आप 9 से 10 नंबर ला सकते हो गेट में, राइट। अगर आप 12 से 14 नंबर का आ रहा है गेट एग्जाम में, देन यू कैन स्कोर सर 9 to 10 मार्क्स। अंडरस्टूड? सो ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच। ओके उद्धव, ओके, थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट, सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट। यस, पीवाईक्यू एंड मैराथन में हम लोग मिलते हैं, पीवाईक्यू सीरीज एंड मैराथन क्लासेस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।